Today we'll discuss the fairy tales, Oscar Wilde, The Nightingale, the Rose. Where it's a fairy tale like you have known that human beings, animals like talking like human beings, share human voice and thoughts and sorrows also. So it relates the relationship between Nightingale, a student, and a girl. Especially, we'll find that how the Nightingale sacrificed her life for boys or students' love. The text will move here. She said that she would dance with me if I brought her red roses, cried the young student, but in my old garden there is no red rose. The sentence starts in this way that the student was crying for a red rose. Why he was crying for red rose? He was crying for a red rose because if he will get a red rose, he will give to his beloved, and his beloved will dance with him in a prince ball, a prince party. But to give his beloved a rose, he was searching here and there, but did not get a single red rose to give to his beloved. And that's why she was feeling sorrow, and that's why she was crying for a red rose. And but he did not get it, a red rose throughout the garden. तो ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୁଅ କଣ କରିଛି ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛି ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗାର୍ଡେନରେ ସେ ଗୋଟେ ବି ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପାଇନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପାଇବ ସେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଟା ସେ ତାର ବିଲଭ୍ଡ କୁ ଦବ ଆଉ ବିଲଭ୍ଡ ଟା ତା ସହିତ କଣ କରିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଯଦି ସେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ତ ବିଲଭ୍ଡ କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ବଗିଚା ସାରା ବୁଲି ଆସିଲା ଗୋଟେ ବି ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପାଇଲା ନାହିଁ କି ତାକୁ ସେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ସୋ ଏଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି के बसिଛି the student. I think from her nest in the oak tree, the nightingale heard him and she looked out through the leaves and wondered. So when a student was crying for a red rose, at the meantime, a bird called as nightingale was hearing the student's voice while sitting in her nest in the oak tree. She looked out through the leaves and wondered. So she peeped through the leaves and became wonder. ଯେତେବେଳେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କଣ କରୁଥିଲା ବର୍ଷାରେ ବସିଥିଲା ବା ବର୍ଷାରେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନଉଥିଲା ତ ଓକ୍ ଟ୍ରିରେ एकथा से शुणिला जे जोठी स्टूडेंट ट्राई करूची गोटे रेड रोज पाई एही समय से पत्र भीतर आउडर उल्लेई की बा कुंडी की अने की आश्चर्य हो गला गोटे पुओ गोटे छोट नाली गोलाप फूल पाई कांदुचे नेक्स्ट पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट ए बॉयज स्पिलिंग the boy is talking to himself here the next paragraph the boy is talking a student is talking to himself no red rose in my entire garden he cried, his beautiful eyes filled with tears. Ah, happiness depends upon such little things. I have read all that the wise men have written. All the secrets of philosophy are mine. Yet, for want of a red rose, is my life made waste. तुमसे कुछ no red rose in my entire garden. The boy कौन कहूँ निजु निजे कहूँ the boy is talking to himself. I have searched here and there, but did not get a single red rose in my garden. And by saying these words, no red rose in my entire garden, his beautiful eyes filled with tears. এই সময় কোনটা হইছে এই কথা যেতলে কହୁଛି যে মো বগিচারে গোটে ବି নালি গোলাপ ফুল নাই এই সময় তা আখিটা কোন হଉଛି ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଉଛି happiness depends on such little things so he was exclaiming that sir प्लीज सर आउथरे सर मूलरू सर ए पेज रो बुझे देबे happiness depends on such little things खुशी कोन ए छोटे जिंस पर निर्भर करे छोटे जिंस माने कोन गोलाप फूल I have read all the wise men have written all the secrets of philosophy are mine yet for want for a red rose is my life made waste se कहूची I have read all the wise men have written. All the wise men have written different type of philosophy, different type of secrets of love. I have read about it. Still, for a single red rose, my life became miserable.
से कहउचंती जे जते प्रकार फिलोसफी दर्शन शास्त्र लिखाई छि जतक बुद्धिमान लोक चालाक चतुर लोक जहाँ सब लिखिथिले लॉ विषय रे जहाँ भी सीक्रेट विषय लिखिथिले सेटा सब पढ़ी तथापि एते जिनस पढ़िला पर भी मते किंतु गोटे जिनस मो जीवन को दयनीय कर देछि मिजरेबल कर देछि सेटा होछि कोन दैट इज कॉल्ड इज गोटिए छोटिया नाली गोलाप फूल छोटिया गोटिए नाली गोलाप फूल a red rose has made my life miserable though I have read all the secrets of philosophy all the wise men have written but still a red rose had made my life miserable. Next paragraph. Here is a true lover, said the nightingale. His hair is dark as the night, his leaves are red as the rose of his desire, but passion has made his face like pale ivory, and sorrow is upon his brow. Here is a true lover. So the nightingale कौची जे देखो ये होटे होटे होची ट्रू लवर जतले हम प्रीवियस पैराग्राफ टा पढुतले सेते बेले बॉय टा निजु निजे कहउतला द बॉय वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ एबे वर्तमान नाइटिंगेल निजु निजे कहउची फॉर पॉइंटिंग आउट द स्टूडेंट the boy का स्टूडेंट सेम कहता है से स्टूडेंट को पॉइंटेड करी कहउची said the nightingale here is a true lover सତରେ ये होची ट्रू लवर now he is making comparison his hair as dark as the night his leaves are red as the rose of his desire but passion has made his face like pale ivory and sorrow is upon his brow here is a true lover the nightingale एठी कहउची देखो ये होची गोटे ट्रू लवर माने एन पचतो सच्चा प्रेमिक now the nightingale is making simile comparison करछि similar metaphor भीतर हम कहया पे चाहू छी या पढिया पे जे similar होछि हम जे तीन जिंस को हमें कंपेयर करिबा आज और लाइक लगे कि ताले एटा हम भाबिबो जेटा simile जदि हम दीटा जिंस को कंपेयर करछि विदाउट यूजिंग आज और लाइक दैट इज कॉल्ड metaphor तो एटी simile यूज हेछि simile यूज हेछि मन देखो एटी कोन हेछि जे एटी नाइटिंगेल कोन करछि स्टूडेंट रो बॉडी टाको बा विभिन्न पार्ट रो बॉडी पार्ट को कंपेयर करछि फर्स्ट ऑफ ऑल एटी कंपेयर करछि कोन हिज हेयर इज डार्क एज द नाइट तो एटी से कंपेयर करछि जे चुटीटा कोन ना डार्क एज ए नाइट माने कोन डार्क एज ए नाइट माने बुझि परछो त रातिटा केमि थाए अंधार थाए तो बतन ता चुटीटा केमिति अछि अंधार अछि एटी कंपैरिजन कोन हेछि आज जेतल आज एटी कंपैरिजन हेछि तले एटी जानि परिबो जे एटी कोन कराइछि ना एटी सिमिल कराइछि कोन कराइछि सिमिल कराइछि and his leaves are red as the rose of his desire जदि रोज हम जति की इच्छा देखिबा डिजायर देखिबा जेमिति रेड कलर रो त लीव्स तो मध्ये सेमिति रेड लीव्स तो कास्ट कंपैरिजन कराइछि रेड रोज सहित कंपेयर कराइछि रेड रोज सहित कंपेयर कराइछि एटी कोन हेछि आज लागि त ओठोटा नाली काहा भलिया ना रोज भलिया नाली बुझिबा छ मुझा पढा होछि तो his leaves are red as rose of his desire but passion has made his life like pale ivory passion कोन करछि त इच्छाटा को पेल आइवरी कर देछि मलिन पकई देछि तार जो मन भीतर इच्छाटा कोन हेछि मुख मुंड देखले पळुछ लागु जेमिति मलिन पड़ी हेछि मलिन माने कोन निजो के एता एक्टिव लागु डी एक्टिव लागुछि एंड सरो अपॉन इच ब्रो तो आइवरी रे देखला लागु गणा पडुछि दुखुडा का सब नदी तो दुख नदी से माने बुझी परथबो तले एठी हम जानि पाले जे एटी सिमिली की मेटाफोर कोन यूज हेछि जानि पाले ना नहीं देखो एठी हमर जो हेयर को का से कंपैरिजन कराइछि का से कंपैरिजन कराइछि नाइट सहित ताले यूज कोन हेछि वाटेड देखो आज एटा होछि सिमिली बुझी पाइलो तो हेयर को का से कंपैरिजन कराइछि नाइट से कंपैरिजन कराइछि आउट जगह देखो एठी आउट जगह देखो एठी भी एटी कंपैरिजन कराइछि
कौन कंपैरिजन कराइछ देखो एठी लीव्स टाको कास तो कंपेयर कराइछ रोज सहित केमिति कंपैरिजन कराइछ का सहित आज नेक्स्ट ला कोन एटा कोन शो करूची चार्ज रेड रेड बोली शो करछन लीव्स रोज आर रेड आज तो एठी जणा पडुची एठी केमिति सिमिलर मेटाफोर टा कंपैरिजन हेछि मु भावची बुझ पल्ला बोधे I think you have understood. Yes, sir. Yes. Move to the next. The prince gives a ball tomorrow night. Sorry, the prince gives a ball tomorrow night. The prince gives a ball. Ball means small party. Rajgarh jo party diya hai, that is called small party. The prince gives a ball tomorrow night. Murmured the young student. Young student is murmuring he kauchi. The prince gives a small party tomorrow's night. The prince gives a ball tomorrow night, murmured the young student. Sir, mute. Sir. Paragraph. In this third paragraph, fourth paragraph, we can say, the prince gives a ball tomorrow night. Se kon kouchonti je asanta kali raja kon karibe gote party debe. Murmured the young student. Young student kon hochi gungun hi kouchi je raja asanta kali raja no the prince mane hochi rajkumar. To rajkumar asanta kali gote party douchonti. Au se party re and my love will be there. Mo beloved se if I bring her a red rose, she will dance with me till dawn. जति मु ताको रेड रोज देबी जे मो सहित कोन करिवो राति शेष पर्यंत नाचिबो तमने एटसे कहउजंती द प्रिंस गिव्स अ बॉल टुमारो नाइट ए जो कथाटा जो पैराग्राफ डिस्क्राइब करा होची एति कोन कहउची ना स्टूडेंट निजु निजे कहउची जे आसंदा काली राजा कोन करिवे ना गोटे छोट पार्टी देबे अपसिट पार्टी रे कोन हबो मो लव करबी बुझबेला my love will be there and if you bring her a red rose she will dance with me till dawn ta mane कहउचंदी जदी मु त कोटे नाली गोलाप फूल देबी ताले से कोन करिवो till dawn माने राति शेष ला पर्यंत से मो सहित कोन करिवो डांस करिवो एइटा छि बॉय रो थिंकिंग जे स्टूडेंट रो थिंकिंग से तार एक्सप्लेन करूची जे आसंदा काले कोन घटिवो बोली If I bring her a red rose, I shall hold her in my arms. She will lean her head upon my shoulder. Her hand will clasp in mine. देखिए जेमिति फॉरेन कंट्री में आगुन ब्रिटिश में नाचुतिले वेस्टर्न स्टाइल डांस जेमिति तारा अंकल हाथ करथिबो तापर मुंडो कांध रखितो हाथ जोड़ी जो नाचन छोड़ा तो से डांस करथबो ना नाचुतिबो कि नाचुतिबो समस्ते नाचुतिबे so it will one type of western dance like that से कौन करते हो ना हाथों को से तरह हाथ I shall hold her in my arms मु तक हाथ धरिबी त मुंडटा से मो कांध पर आउ तापर परस्पर क्लास करके हाथ धरा धरी की नाचू but there is no red rose in my garden तो एई समय तो खुशी भावना आसी सडले पुनी पळाय आसी सरो भावना को से कहउची but there is no red rose in my garden मो बगीचा रे गोटे भी नाली गोलाप फूल नाही so I shall sit lonely with today bosibi and she will pass me by se ko kare mo agre cross kare it's talking about the insect ball and she will dance with others only one of the natural my heart will break heart ko nahi jibo break is so it was a thinking of a student what will happen next in tomorrow's night if he will get a red rose what will happen to him if he will not get a red rose what will happen to him so this type of monologue conversation was created by a student himself and he was indulged about the story so what will happen that because he was worrying about a single red rose if he will get a red rose
His life will be cherished with happiness. If he will not get a red rose, his life will be a boring. Okay, his maybe his heart will break because he will dance with others, he will not dance with himself. So here is the main matter for him is a red rose. Without a red rose, the happiness will be put passed away, maybe gone forever for him. Next, night after night have I song of love. He was saying that night after night have I song of love for the nightingale. What I sing of he suffers, what is joy to me or to him is pain. So your love is wonderful thing. It is more precious than emeralds, dearer than fine opals, pearls and pomegranates cannot buy it, nor is it for sale in the marketplace. It may not be purchased from the merchants, nor can it be weighed out in the exchange for gold. Here he was saying that night after night. Night after night means what? Rati sara. Night after night. Have I song of love? Rati sara mu gita gaibi ki? Song of love. So this was the question. So in this paragraph, the nightingale is talking to herself. Nightingale is a now she was comparing love into different things and creating value of love. What is love's value? The nightingale was creating. He was saying that night after night, have a song of love, though the nightingale, heard the nightingale, and what I sing of his suffers, what is joy to me, to him is pain. The nightingale now is thinking, have I go through my natural way singing the song of love? Nightingale तो तमें जानी थी सदालो गीत गाए तो राती को राती में love रो गीत गाई की Nightingale भावुक Now she was waiting. What I sing of his suffers. ମୁଁ ଯଦି ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି it is joy to me ମତେ ଏଟା ଖୁସି ଲାଗିବ ଯଦି ମୁଁ love song ରେ ଗୀତ ଗାଇବି ତାହେଲେ ଏଇ story କୁ ନେଇକି love song ଯଦି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ତାହେଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ into him is faith into taku ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ because his love is not going to fulfill the love ଟା fulfill ହବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ which gives me a lot of pain if I sing the song of love which creates pain in his heart and he will suffer. So why should I sing a song? If it will gives me a pleasure, if it gives me a happiness, a joy, but it gives me a pain and maybe a more maybe more painful for him if he'll sing the song of love. So it was the thinking of Nightingale. Now the Nightingale became dilemma. So now he was comparing the love with not dilemma. Nightingale was comparing the love with the different valuable things in the world. First of all, he is comparing the love with the word emeralds. Emeralds, you know, is a valuable product. जोटा कि आमे कहू थाउ कोन जे मणि भी कहले हबो बा गोटे सबुज रंगर गोटे मणि बा valuable metals मध्ये कहले भी चलिबो. Dearer than fine opals. Opals सहित भी से कंपेयर करछि. Opals माने होछि कोन ना तमे होछि जानिथिबो गोटे धळा आ नीलिया रंगर गोटे मूल्यवान पत्थर जोडा कहै छै जोटे कि आमे को गोंतमणि भी कहली भाबो जोटे कि हमर गोटे वन टाइप ऑफ फाइन वैल्यूएबल प्रोडक्ट जोडा कहै छै से भी वन टाइप ऑफ मणि. Pearls and pomegranates. Pomegranates तमे जानिथबो pomegranates माने कोन डाळिंब हां डाळिंब डाळिंब बेदना भी कहली चलिबो डाळिंब भी ठीक हबो आउ हमर pearls मध्ये कहली तमे जानिथबो जोटे कहै छै मुक्ता आउ मोती माणिक जो कोन मुक्ता that is called pearls. मुक्ता बा जो मोती मोती उडा कहली हबो that is called pearls. तो पोमेग्रेनेट मन डालिंब फल भी जानि पड़तो डालिंब फल को पोमेग्रेनेट्स करंती. So these जो example dates emeralds, opals, pearls and pomegranates, these are the more valuable products today's date. तो से valuable products से तो love मध्ये से कंपेयर करछि जे love हो जोटे एसेट जिनिस जोटे कि प्रीशियस माने मूल्यवान emeralds थर भी मूल्यवान ओपल्स भी अधिक नियर माने अधिक भल पाइबा ओपल्स जति भल पाइबेनी ओपल्स माने मुक्ति मणि मणि बा जोटा कुआ जाय से सबुज नाली रंगर मणि तो जति भल पाइबेनी लव तो जति भल पाइबे. Pearls and pomegranates देके जदि हमें कहबा जे मुक्ता और डालिम फल देके लव ता किनिबा
एटा भी संभव नुहे तो से एटी कहउछंती इट इज मोर प्रेशियस देन emeralds थारो बा मूल्यवान पत्थर थारो भी ये प्रेशियस माने होची मूल्यवान फाइन ओपल्स माने संपूर्ण बढ़िया जिनसे ओपल्स बा कहसे फाइन कलर रो ओपल्स फाइन कलर फाइन माने पूरा परफेक्ट शेप एंड साइज यदि ओपल से आमी ताको कंपेयर करिबा ताले लव ता बहुत डियरर आसीबो फॉल्स एंड पोमिंगेस एंड मुक्ता और डालिम फल से यदि आमी ताको कंपेयर करिबा ताको यदि एक्सचेंज करिकि आमे लव ता क्लियर करियो ताले हेई परिबो नै नॉर इट इज सेल इन द मार्केट प्लेस में एटा बिक्री हुए नै इट मे नॉट बी परचेज फ्रॉम द मर्चेंट्स व्यवसायी टू बी मर्चेंट्स एंड व्यवसायी तांको पत्र भी तमे किनि परिबो नहीं nor it can be weighed out exchange of gold सुना दर तमे exchange यदि करिया पाइबो ताले असंभव so it has been explained about the different things it has explained about the how the love is more valuable and which you think that love you can get with the different type of value things first of the Nightingale says that it is a wonderful things it is more valuable than emeralds very closer to the opals and if you buy with the exchange of pearls and pomegranates you cannot buy it if you want to sell in the marketplace you cannot sell in the marketplace and if you want to purchase from a merchant it cannot be possible if you want to weight means ojan kariyo jati got exchange of gold to tam jati jako ojan kariyo love ta ko eta possible nuhe तो से कहउछिते लवटा एमरल्ड्स थार बा मूल्यवान पत्थर थार भी बहुत मूल्यवान ओपल्स थार भी मूल्यवान बा बहुत क्लोजर मध्य आ तमे जे मोती आ डालिमा फल द्वारा जदि ताको किनिया पे चेष्टा करे तबे किनि परिबोनी मार्केट प्लेस जदि तमे ताको बिक्री करे पे चाहो सेटा भी संभव नुहे जदि तमे कोनोसी वेबसाइट भी जदि किनिया पे चाहो सेटा भी संभव नुहे नॉट इट कैन बी weighed out in exchange of gold सुना तर तमे जाको ताको जदि ओजन करिवो exchange करी ओजन करिवो ताले एटा भी संभव नुहे so from these valuable things a valuable product the love is more powerful and it is obviously create a wonderful for the Nightingale so it is not available in the marketplace it is not sell in the marketplace it will not available in the persons okay so here the Nightingale says love is more valuable and more interesting the musician will open their string instruments, said the young students. Now the dialogue conversation comes to boys, where the boy was talking to himself, where he was talking that the musician will play upon the stringed instruments, said the young students, and my love will dance to the sound of the harp and the violin. So he was saying that the musician will play upon the stringed instruments. Stringed instrument means तमने पूछे दरकार जोड़ा के instrument like violin, guitar, harp. It is जो instrument जो तारा दार joint है इस वजह से कहते stringed instrument. तो string का धरी जो मन कितना बजाते violin मन देखी तो इसे string ऊपर बजाते guitar मन इसे string ऊपर बजाते harp उड़ा देखी तो लंबा लंबा टाइप का जो harp बजाते string instrument मन बजाते तो से कोची जे जो प्रिंस बॉल पार्टी हबो काली आसंता काली राती रे सेठी जो म्यूजिशियन मन थिबे a musician माने से string instrument माने बजाइबे said the young student my love will dance to the sound of the harp and the violin so in a prince party there will be musicians and they should play the music with the string instrument or they would play the music with the string instrument according to the music instrument my girlfriend will be there and she will dance according to the sound rhythm you can say sound of the violin and harp and she will dance. She will dance so lightly that her feet will not touch the floor and the courtiers in the gay dress will throng around her. So here the boy was talking, the student was talking that my girlfriend will be in the prince party and the prince party there will be musicians and the musicians play the music with the harp and violin and according to the rhythm, according to the sound of the violin and harp my girlfriend will dance so lightly that her feet will not touch the floor. एते सुंदर भाव नाचिबो से तार violin और harp द्वारा जेमिति ते पाद ग्राउंड को टच करिबो पूरा हल्के स्मूथली she will dance और एते सुंदर नाचिबो जा फळे courtiers in the नंबर क्लियर है ये कौन है ना
बुझी पाछ जा पढ़े सर गे ड्रेस माने कौन वाला बुझी पाले जा पढ़ाला सर गे ड्रेस माने हेलो आज्ञा सर मो कथा सुना जाउची सर मो कथा सुना जाउची की सर सुनना तो Yes, जाके sir. रिप्लाई जाऊनी Yes. हेलो Yes, sir. Yes, sir. हां सर गोटे मिनिट सुना गला मो कथा सुना गला मो कथा Yes, सर sir. यस Ex- सर toss the floor and the courtiers in the gate dresses will throng around चारिपटे कौन बसे घुरी बुलिबे throng around him and but with me she will not dance for I have no red rose to give her and he flung himself down on the grass buried his face in his hands and wept तो एक तो भाबी कि से कौन हला जे माने मन दुख करी पकइला जे मोर वर्तमाने रेड ड्रेसेस विल स्ट्रांग अराउंड ता चारिपटे घेरी जे स्ट्रांग मींस व्हाट माने गहली करबा ता चारिपटे घेरी जबा गहली करी किछु घेरी जिबे कारण से एते सुंदर डांस करबे चारियाडे कोर्टियस माने कोन करिवे घेरी पड़िवे but with me she will not dance किंतु से मो सहित नाचिबो नै for I have no red rose to give her कहिगे ना मो पाखरे गोटे भी रेड रोज नै ताको दबा पाई he flung himself down on the grass and buried his face in his hands and wept ए समय कोन कला से भाबुच मो पाख तो रेड रोज नै आ मो पाखरे एते सब जिंस कटि परिबो नै कि मो सहित नाचिबो नै या भाबी flung himself on the grass या कहि कि घास ऊपर से कोन कला ना पड़ी गला and buried his fair hands with wept मो कांदी कि से कोन कला हाथ को घोड़े पकेला के the young students बुझि पल्ला तो have you got it or not Yes, sir. सर Yes, sir. लास्ट लाइन टा बहुत बुझे दियन तो he flung himself down on the grass and buried his face in his hand buried his face and wept ता माने जेते बळे एक तो कांदी पकेला जे ता पाखरे नाही डांस प्लस से समय कोन कला घास ऊपर पड़ी जे गार्डन ऊपर बसी भागुतला ना से घास ऊपर पड़ी गला संगे से मुंहटा कोन कला हाथ जो पापुली जो अछि मुंहटा को कोड़े पकड़ी कांदी आरंभ कला buried his face in his hands माने ता पापुले मुंहटा कवर पड़ी कि हे हे टिके मन दुखरे कांदिला काई कांदिला ना बिकॉज़ ता पाखे रेड रोज नाही आ जदी रेड रोज तांत तल से बिल्ला बुद्यांता एति सु सीन उडा को घटला ता पे खुशी लागंता तो ता पाखे रेड रोज नाही ए सु सीन से घटी परिबो नाही एबे बुझ पाइला सर फ्लॉन्ग माने सॉरी फ्लॉन्ग माने एटा फ्लॉन्ग माने तार कोन प्लिंग पास्ट टेंस हेच ना माने कर धरे मोर से कोन गछ बॉडी पड़ीबा माने हिमसेल्फ डाउन ऑन द ग्रास ई फ्लॉन्ग निजो निजे पके द ग्रास पर निजो निजे से कोन कला ना पके बगैला बुझ पछ नै प्लिंग रो फ्लॉन्ग हेची जोटा कोआ से थ्रोइंग करे फोपाड़ जानी चकु या थोड़ा सडन को तळे पड़ी जा पके दवा सडन जिंती आदला ना सडन पड़ी जीवा भाभी जी मन दुख बुझ पल्ला नै फ्लॉन्ग माने आर्ट ऑफ थ्रोइंग हिमसेल्फ बुझ पाइला and buried his face in hands हाथटा को मोदल उलसे देखी और तांदिबा आरंभ कला why is he weeping asked the little green lizard as he ran past him with his tail in the air इस समय green lizard काम करतला एया तो बहुत जोर जोड़ के जाउत देखियो तो से कांदु अरे से कई कांदु छी green lizard पचाउची why indeed said butterfly who was floating about a sunbeam सूर्य किरण वाले गोटे बटरफ्लाई कौन करला ना सनबीम दा फ्लटरिंग करला फट 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 साउंड कर फ्लटरिंग दा डेना से फ्लटरिंग करी देखुतला
हाँ वास्तव में से कहीं की कांदुची he is weeping for a red rose said the nightingale nightingale से मन कहूची से कांदुची कौन पई गोटे नाली गोलाप फूल पई से कांदुची कौन पई कांदुची गोटे नाली गोलाप फूल पई से कांदुची okay for a red rose they cried how very ridiculous तो कि हासिस बदले किछि सेटा भी ठीक ही परिबो तेणु एठी से कहउचंदी हाउ ए रिडिकुलस गोटे रेड रोज पाई से कांदुची एमान पाई लिजर्ड पाई तमर आंक पाई भी हेई पारे जे ग्रीन लिजर्ड पाई हेई पारे एटा छोटिया जिंस कि तम आ पाई जो हमर कहंती बटरफ्लाई पाई एटा छोटे जिंस पारे तो से माने हसी कहउचंदी बा जोटा कहंती थटलिया भाबरे बा उपहास करिकी कहउचंदी से गोटे red rose ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି for a single red rose he was crying for that but the nightingale understood the secret of the student's sorrow nightingale understood ବୁଝି ପାଟଲା the student ର secret କଣ ବା ତାର ଅସୁବିଧା କଣ ବା ତାର students ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖଟା କଣ ତ ଏଠି for a red ଏଠି ତ କରୁଛନ୍ତି it says no one type of ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରେଡ ରୋଜ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ତ ଏଠି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚକୋଲେଟ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଫନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନାଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଟା ବାହାର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଗ୍ରୀନ ଲିଜର୍ଡ ଆଉ ବଟରଫ୍ଲାଇ ପାଇଁ but the nightingale understood the secret of the students sorrow student ର କଣ ଦୁଃଖଟା ଅଛି ସେ କଥା ସେ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଦୁଃଖଟା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି and she said silently in the oak tree this nightingale comes silently ବସିଛି and thought about the mystery of love the mystery ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଲିଜର୍ଡ ଆଉ ବଟରଫ୍ଲାଇ ଯେତିକି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଫନ तो सिकत्र से भाषी जाइनी से कारण जानिछि स्टूडेंट्स रा सिक्रेट कोन आ सेति पे से मन दुख करिछि आ से साइलेंटली ओपी रे बसिछि आ लव द मिस्ट्री दिस वाज द समरी ऑफ द फर्स्ट यूनिट